अच्छी जदि मोर कंडीशन फॉल्स होची तो एटलीस्ट वन टाइम द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड या okay if your condition is false at least one time the statement is executed in the repeat until if your condition is false in the while loop there is no statement is execute while loop रे जदि मोर कंडीशन टा फॉल्स होची ताले मोर कोनोसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हबनी किंतु रिपीट अंटिल रे जदि मोर कंडीशन फॉल्स होची एटलीस्ट वन टाइम योर स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट ओके एटा लिखो रिपीट अंटिल टा सर हम बुझेबी सर आउ थेरे टिके कहबे रिपीट अंटिल टा व्हाइल लूप रे मोर गोटे कंडीशन पास करिवि जदि मोर कंडीशन टा ट्रू होउची ताले मोर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हबो जदि मोर कंडीशन फॉल्स होउची ताले कोनोसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हबनी रिपीट अंटिल का हबो जदि मोर कंडीशन फॉल्स होउची एटलीस्ट वन टाइम मोर स्टेटमेंट टा एग्जीक्यूट हबो बुझियला आज्ञा सर हेलो 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 सर हेलो सर हेलो सर हेलो आज्ञा सर तार नेटवर्क हेलो आज्ञा सर बुझिदा मो कथा सर क्लियर सुबुनी वॉइस टा कमी कमी जाउची एबे सुबिला ठीक आज्ञा सर देखो व्हाइल लूप रे कोन कंडीशन नउतला
एठे रहला while loop, then condition, while loop रे condition दिया हला, suppose मैं गोटे प्रोग्राम डिफाइन कर दूची, begin then end, okay, then while, so here I define numeric n norm is equals to 10, so while n norm is greater than equals to sorry less than 20, then begin end a display n norm, okay, then n norm is equals to n norm plus 1, 10 is less than 20, condition is true, then printing you 10, then 10 plus 1 11, then this process is continue, okay. जदि मुझे 100 define करिवे, 100 is less than 20, condition is false, so when condition is false no statement is execute, but in the case of repeat until ले कौन आसीबो, एटा होची एटे मु यूज करिवी repeat begin and end, sorry display okay, the first 100 repeat it is showing you 100 plus 1 101, तापर एठी condition check हेबो, 101 is less than 20, condition is false, so when condition is false at least one time the statement is execute, so difference between while loop and do while loop is what, if your condition is false at least one time your statement is execute, बुझियला संगीता सुनलता, ଆଜ୍ଞା sir। so tell me which of the following construct execute until the condition is false, if the condition false and break if the condition becomes true, what is it? Sir, repeat until No, switch case repeated, sorry, एटा करि परिबो, sir, write a pseudocode to print all the leaf ଆଜ୍ଞା sir, in the, ଆଜ୍ଞା sir, leave years between the range sir କରିବୁ try କରିବୁ ଆସିବ sir, एटा लेखो, write a pseudocode to display all the leap year between 2000 to 3000 year, संगीता लेखुछ तो संगीता लेखुछ, sir screenshot ନେଇ ଯାଇଛି ପଛରେ ଲେଖିଲେ ହବନି, स्क्रीनशॉट तुम लेखुछ तो ये होची कथा, ଆଜ୍ଞା sir ମୁଁ ଅଧା ଲେଖି ଦେଇଛି ଏଥିରେ screenshot କିଛି ନେଇ, sir question ଟା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବେ,
So here we are using Sangita. Hello. Yes, sir. Join करছো ना व्यस्त अછો? देखो न्यूमेरिक एन ईयर एंड काउंटर. सो हमर क्वेश्चन थिला कोन ना 2000 रो 3000 भितरे जो ईयर गुडा को अछि कोडा लीप ईयर में पाइबा. तो न्यूमेरिक ईयर काउंटर काउंटर इक्वल टू 2000 रिपीट रे रिपीट कराला ईयर रे मु 2000 पास करली. तापर मु जो ईयर टा पास कली ईयर मॉड्यूल 400 इज इक्वल टू 0. एटा होछ हमरा कंडीशन फॉर लीप ईयर और ईयर मॉड्यूल 100 इज नॉट इक्वल टू 0 and year modulo 4 is equals to 0, then it is showing you this is a leap year, or else it is showing you this is not a leap year. And this condition is continue until the counter is 3000, because it has given that you have to find out the leap year between 2000 to 3000. 2000 to 3000 भितरे हमें leap year टा बाहर करियो. Okay, just a minute. There you are. Is while creating a lengthy program that contain a multiple functionality and repetitive statement, you can divide a program into a module. Okay, जेमते कि घरे जिते बेले तुम काम करूच, घरे जिते रोच माँ को तुम हेल्प करूच, परिवार काटिबारे साहाय्य करूच कि सफा सफी रे साहाय्य करूच. सो दैट कौन हुए ना माँ को जो कामटा करने को पड़े सेटा रिड्यूस हो जाए, तांको टिके सहज पड़ी थाए. तो while loop टा होची से माने हमर मॉड्यूलर अप्रोच होची सेमती divide a program into module, make it is easy to understand and debug. The purpose is to call each module whenever any functionality associated with it the same name needs to be performed. Okay, तो आमे मॉड्यूल टा यूज करिबा गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को छोटो छोटो पार्ट रे कन्वर्ट करिबा पई आमे मॉड्यूल यूज करिबा. एंड से सबू छोटो छोटो पार्ट टा इंडिविजुअली हैंडल हबो, तापरे मेन मॉड्यूल ले कॉल हबो. बुझी पाइलो संगीता, स्वर्णलता? ଆଜ୍ଞା ସାର୍. संगीता बुझी होची? Yes, sir. Then structure programming technique, it provide a way to break a long and continuous program into a series of individual module. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आम यूज करुचे, आम ताको ब्रेक करके छोटो छोटो पार्ट रे आम कन्वर्ट करवा. मॉड्यूल्स कैन बी इंटीग्रेटेड थ्रू ए मेन प्रोग्राम. फ्रॉम ए मेन प्रोग्राम यू कैन कॉल ईच ऑफ द मॉड्यूल्स. तो मेन प्रोग्राम टाको आम छोटो छोटो पार्ट रे आम कन्वर्ट करवा. So it is a modules main program, then module 1, module 2 and module 3. Okay, देखो एटा होची हमर मेन प्रोग्राम. ए मेन प्रोग्राम टाको हमें तीन भाग रे विभक्त करले, module 1, module 2 and module 3. आ एटा कॉल होला कोठी ना मेन प्रोग्राम रे कॉल होबो. बुझियला? ଆଜ୍ଞା ସାର୍. Yes, sir. लिखो लिखो स्ट्रक्चर प्रोग्राम. मैं घरे कौन करूँ ना साहाଯ୍य करूँ, माँ को साहाଯ୍य करूँ, आम जो छोट छोट कम गुड़ा करदे माँ को सीटा हेल्पफुल हुए. तो सेटा हूँ आम मॉड्यूल. तो while dividing a complex program into module, you can declare a variable within the begin and end block of a main program or inside the module. The block in which variable are declared is called as the scope of variable. जो block रे आमे variable टा define करिबा ताको कहबा scope of variable. variable टा जदि begin आउ end भितरे define हुए ताको कहवा जिवो local scope. Suppose हमें वेरिएबल टा डिफाइन करिवा बिगिन एंड. जदि हमें वेरिएबल टा डिफाइन करूचे
एटा स्मॉल भी हबो एटा वर्ड बोली सिमते आछि हां बस 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 न्यूमेरिक बस 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 न्यूमेरिक n norm, that means it is called as the global variable. जदि आमे outside of the begin and end block रे define करिवा आ को आजीवो global variable and variable that is defined inside the begin and end block, there is norm 2. Numeric norm 2, it is having a local scope. It's called as the local variable. The variable that is defined outside of the begin and end block is called as the global variable. The variable defined inside the begin and end block is called as the local variable. देखो depending upon the place where variable are declared, the variable have the following type of scope. One is global scope, another is local scope. The variable that can be used anywhere in a pseudocode have a global scope and are called as the global variable. Global variable are declared outside of the module or begin and end block. तो ये जस्ट तुमको देखेली जोटा begin और end block बाहर define करा हबो ताको कहजिबो global variable, and that variable that is defined inside a begin and end block, that is called the local variable. So now if you see this main in a program, numeric norm1 norm2 n sum, ये जो norm1 norm2 n sum define करा हला एटा कहजिबो global variable, and the variable that is defined inside the begin and end block, that is called the local variable. तो एटी सबु जाक variable जो define करा हला एटा को आगला global variable. बुझियला संगीता सोनलता? Yes, sir. आज्ञा सर. Variable that are declared inside the begin and end block of a main program, function or procedure have the local scope and are called as the local and internal variable. Local variable are created when the statement which is declaring the internal variable in the begin and end block is executed. Okay, the begin and end block भितर एटा execute होगा. It is go out of scope when the control transfer to the statement outside of the begin and end block. Okay, local variable are created when the statement which is declaring the internal variable in the begin and end block. It is go out of scope when the control transfer to the statement outside of the begin and end block. आमे जदि outside of the begin and end block भितर जीवा ताले सेटा को आजो local scope. Next देखो the modules that we are defining, आमे जो modules define करूचे ए modules टा होची दुई प्रकार रा, गोटे होची procedure आ गोटे होची function. The procedure is a set of statements that perform a specific task. The functionality of the procedure term as call return mechanism. Procedure is a set of statements that perform the specific task. The functionality of the procedure term as call return mechanism. The following steps are the part of call return mechanism. A procedure is called. The set of statements stored within the procedure are executed. The control is returned to the calling code. Okay. The procedure is a set of statements that perform the specific task. Functionality of a procedure is termed as a call return mechanism. माने आमर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम टा को छोटो छोटो पार्ट रे डिवाइड करिया पई आमे प्रोसीजर यूज करूचे. आको कॉल रिटर्न मेकानिज्म कहबा माने आमे प्रोसीजर टा डिफाइन करबा तापर जेता कॉल करबा सेटा एग्जीक्यूट होबो. The following steps are part of the call return mechanism. First is procedure is called. Set of statements stored in the procedure is executed. Then the control is returned to the calling code. बुझियला एटा होची हमर तीनटा प्रोसीजर. फास्ट हमें प्रोसीजर डिफाइन करिवा तापर प्रोसीजर कॉल करिवा. जेताबे प्रोसीजर टा कॉल करिवा स्टेटमेंट विद इन द प्रोसीजर इज एग्जीक्यूट ताको कहजिबो कॉल रिटर्न मेकानिज्म. बुझियला
ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Yes, sir. तो प्रोसीजर डिफाइन करबा को हेले फर्स्ट आमे डिफाइन करबा प्रोसीजर नेम। देखो एठी डिफाइन करा हला कोन, एठी डिफाइन हला प्रोसीजर देन प्रोसीजर नेम। एठी एठी तार एग्जांपल रहला प्रोसीजर टेस्ट प्रोसीजर, एटा होचे टेस्ट प्रोसीजर। एटा हला प्रोसीजर डिफाइनिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर को डिफाइन करिया पे प्रोसीजर कीवर्ड यूज करबा। आ टेस्ट प्रोसीजर हला तार ना। जेंति देखा प्रोसीजर टा डिक्लेरेशन पई कोन यूज करा जीवो, प्रोसीजर नेम बिगिन आउ एंड ब्लॉक। सो बिगिन आउ एंड ब्लॉक भीतर हमारा प्रोसीजर डिफाइन हला, बुझला? आज्ञा सर। ओके ओके। सो नेक्स्ट क्लास काली 11टा बेले तुमर एटा आउ थरे मु आरो एग्जांपल टा मु देखिबे हला। Okay, sir.